everyone. Here is Rakesh Kumar Sharma, your science teacher. Welcomes you. Science class for class 9th. Today we are going to study chapter 2nd. Is matter around us pure? And part 4th. We are discussing since 4 days, and today we are going to study the separating the components of a mixture. एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करें. इसमें हमारे पास टोटल 8 टॉपिक्स हैं. वी हैव 8 टेक्निक्स ऑफ द सेपरेटिंग इन आवर एनसीईआरटी सिलेबस फॉर क्लास 9th. 4 topics or 4 techniques we have discussed in our earlier classes, like color. How can we separate the color component from blue या black dye? Second thing, we have discussed cream from milk and mixture of 2 immiscible liquids like water and oil. And fourth, salt and camphor, how can we separate? And today we are going to study about the technique of the 4 techniques. First one is the dye in black ink a single color. Second is how can we separate a mixture of 2 miscible liquids. Third topic is how can we obtain different gases from air. And fourth topic is how can we obtain pure copper sulfate from impure sample. हम 4 टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं. आज इन चारों के बारे में डिटेल से स्टडी कर रहे हैं. तो अपने पिछली क्लास में आई हैव गिवन सम प्रॉपर नेम ऑफ द टेक्निक्स. टुडे ऑल्सो आई विल give the proper name of these techniques. The name of the first technique is the dye in black ink a single color. We will discuss in detail, but I will give a name. That name is chromatography. The dye is a single color? No, I say no. Dye is a combination or the mixture of 2 and more colors. How can we separate a mixture of 2 miscible liquids? We can separate 2 miscible liquids like water with acetone, water plus other solvent things that are so dissolved in water. That technique I will give a name. That name is distillation. And how can we obtain the different gases from air? Another part of the distillation is fractional distillation, because the air is a mixture of 2 or more gases. Air, we know that the air is the homogeneous mixture in which oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon and other gases are found in the appropriate amount. And we can give the name fractional distillation. Fractional distillation. How can we obtain pure copper sulfate from impure sample? That is crystallization. Let's start the detailed study of the 4 techniques. 4 techniques is the dye in black ink a single color. 4 topics we are going to detailed study. Is the dye in black ink a single color? एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. ठीक है,
filter paper strip and mark a line about 3 centimeter and put a drop of black or blue ink on the marked line, and this strip of filter paper put in a jar or in a pot of water with a thread or with a glass rod at here 1 centimeter dip into the water, and here is the drop. This is filter paper strip, filter paper strip, and here is the water. अब क्या होगा, एक फिल्टर पेपर स्ट्रिप ले ली, फिल्टर पेपर स्ट्रिप में हम क्या कर रहे हैं, इस फिल्टर पेपर स्ट्रिप में इसको हम पानी में थोड़ा सा डुबो देंगे. व्हाट विल हैपन, द वाटर राइजेस अप इनटू द फिल्टर पेपर स्ट्रिप. ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा, एंड वाटर, व्हेन वाटर रीच एट द ड्रॉप लेवल, द ड्रॉप डिवाइड्स इनटू इट्स कलर्स एंड इट चेंज इनटू दैट light. This color is becoming lighter, lighter, lighter and lighter. Light हल्का 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 कलर होता जाएगा. That means the color blue or black ink divide into its parts. So we can say that the color blue or black ink is not a single color. It is the mixture of 2 and more colors which are soluble in water. I can show you an experiment, this type of experiment at our home. We can do by a simple paper. By a simple paper, you can see that is the black ink. That is black ink which is changed into the light colors, and at upper side you can see the light color which is the reddish, and that blue ink, not a blue ink, that is a black ink which turns into blue, and after blue it appears at the borders line, that is in reddish color. इससे मैं कह सकता हूँ this technique is called chromatography. अब ये chromatography वर्ड कहाँ से आया, from where derived this word chromatography. Chromatography, chroma, that is a Greek word where this technique is introduced at first time. So the Greek word chroma means, the meaning of chroma is color. क्रोमा का मीनिंग क्या होता है, कलर होता है, और ग्रीक में सबसे पहले इस टेक्निक का पता लगा, इसलिए this technique was named as chromatography. Definition of chromatography: the technique in which we separate the solute which is soluble in the same solvent. मतलब क्या लिखे हम, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द टेक्निक, मिटा सकता हूँ क्या मैं, चलो, द टेक्निक in which solute particle separated in same solvent. Applications of the chromatography. First, the chromatography is used to separate. किस तरह के उनके जो वो अपने सॉल्यूशन होते हैं, किस तरह के मिक्सचर होते हैं जिनको सेपरेट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज द कलर फ्रॉम द डाई. कलर फ्रॉम डाई. सेकेंड वन इज द पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर्स. पिगमेंट फ्रॉम
natural colors. And third one is the drugs from blood. Drugs from blood. 3 applications of the chromatography. Now, what type of the question asked in the exam? What do you mean by the chromatography? Then you have to write the definition of the chromatography and what are the applications. You can write 2 or 3 applications of the chromatography. Now the next technique is how can we separate 2 miscible liquids from a mixture. मिसिबल लिक्विड्स जो बिल्कुल घुले रहते हैं उनको कैसे अलग करते हैं. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन. एसीटोन और वाटर का हमें एक एग्जाम्पल लेकर के वी डू एन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी करते हैं हम. एक्टिविटी में क्या करते हैं? वी टेक ए फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड टेक द सॉल्यूशन और द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन and connect the distillation flask with a water condenser. Condenser means that condense means that cools the water vapor or the other vapors and change into the liquid state from the gaseous state. इसमें क्या होता है कि जो इसकी यहाँ जो गैसियस स्टेट में आते हैं, वेपर में आते हैं, वो यहाँ जा कर के ठंडे हो जाते हैं. कंडेंसर फ्लोज द कूल वाटर फ्रॉम द लोअर साइड टू अपर साइड, एंटर्स फ्रॉम द लोअर साइड एंड एग्जिट फ्रॉम द अपर साइड, सो दैट कूल्स द टेम्परेचर ऑफ द gaseous state. And this process of separating the mixture of miscible liquids, that is called distillation. The definition of the distillation means, अब ये डिस्टिलेशन क्या होता है? कोई भी जो लिक्विड होता है सबका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है. Each and every substance has the melting point and boiling point. Now both are the liquid form, so acetone and water both have the boiling point. The boiling point of the water is 100 degrees Celsius and the boiling point of the acetone is 56 degrees Celsius. Both are boils at the different temperature. Distillation method is used those substances to separate those substances their boiling point have the difference more than 25 डिग्री. अब ये बात आ जाती है कि 25 डिग्री से ज़्यादा होता है उनका सेपरेशन हम इसके मेथड से करते हैं. डिस्टिलेशन मीन्स क्या होता है? फर्स्ट डिस्टिलेशन मीन्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड चेंज इनटू वाटर वेपर and vapor after cooling down it again change into rock. इसको थोड़ा सा. Distillation means on the boiling point a liquid change in vapor and vapor again condense and change into the liquid state. The process is called distillation. क्या होता है कि डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि ये अपना जो इवेपोरेशन है उससे अलग तरह का मेथड है. इसमें क्या होता है, कोई लिक्विड चेंज होता है, जब उसको बॉईल करते हैं तो वो वेपर स्टेट में जाता है, गैसेस स्टेट में आ जाता है, गैसेस स्टेट से दोबारा से ठंडा होकर के कूल डाउन होकर के वापस उसी स्टेट में आ जाता है. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? अलग अलग होता है. बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है. एक जो लिक्विड होता है अलग टेम्परेचर पे बॉईल होता है और दूसरा लिक्विड होता है अलग टेम्परेचर पे बॉईल होता है. तो दोनों का बॉईल होने का टेम्परेचर अलग अलग है, तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. लाइक इन दिस एक्टिविटी, when we take the mixture of the acetone and water, acetone has the boiling point 56 degrees Celsius, and when we heated the mixture at the 56 degrees Celsius, only acetone change into the vapor state or in the gaseous state, and acetone vapors and goes into the upside, and from the exhaust pipe, that is called exhaust pipe. From the exhaust pipe it goes to this side and enter into the water condenser. And in water condenser, what goes into the exhaust pipe and the water condenser? Vapor of the acetone.
एसीटोन के वेपर इसके अंदर जाती है, वो उसकी गैसीय अवस्था, उसकी जो कि गैस स्टेट होती है वो इसमें जाती है, और गैस स्टेट यहाँ जाती है, यहाँ जो कूल वाटर होता है वो यहाँ पे फ्लो कर रहा होता है, वो उसको उसके टेम्परेचर को क्या कर देता है, कूल्स डाउन करेगा, और कूल्स डाउन होते ही वापर आप 50 डिग्री पर वापस उसी पे आते ही वो वापस किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और यहाँ आ जाएगा आपका एसीटोन। एट 56, 57 एवरेज 60 डिग्री तब तक वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में एसीटोन हो जाता है, एंड वी कैन सेपरेटेड द एसीटोन एंड वाटर इज लेफ्ट एट द डिस्टिलेशन फ्लास्क. This method is used for distillation of the water also. We can remove the impurities from the water by distillation method also. Okay. Next one is the fractional distillation. First we have to understand the difference between the distillation and fractional distillation. Fractional distillation, which used for separate the more than two miscible liquids, and the distillation use only two miscible liquids. And the second difference is the distillation used the two miscible liquids, their boiling point difference is more than 25 degrees Celsius, and if the miscible liquids has the boiling point difference less than 25, then we use the fractional distillation. Here what will be the change in the diagram of the fractional distillation? We can change the diagram of the fractional distillation. We use major use of the fractional distillation is, first one is the distillation of petroleum, crude oil or petroleum, distillation of petroleum. We use the term technique fractional distillation. Second one is the distillation of air. We separate the different gases and we can separate the oxygen from the air. We know the air is the mixture, homogeneous mixture of different gases, and here what is the difference between the distillation arrangement and the fractional distillation? Difference of the distillation and fractional distillation is the difference between the distillation arrangement and the fractional distillation arrangement. The major difference is distillation arrangement, that is only that the flask, that means the distillating flask only, and upon the distillation flask there is a fractionating column. Fractionating column in the fractional distillation. Fractionating column has the glass bead. Glass beads. What is the use of these glass beads? Glass beads are gives the surface to the vapor. वो जो वेपर होती है, जो गैस होती है, यहाँ से यहाँ जाती है, उसको टाइम देती है कि वो कूल होने के लिए. Gives that time to the vapor to cool down, and after that gas state goes into the water condenser, and after the water condenser it cools down and change into the liquid state, or one by one each and every constituent of the mixture can be separated by this method, and we can separate by the fractional distillation the petroleum and the air. Now we are going to study how can we separate the different component, or how can we get the oxygen from the mixture of air. Now we study how can we separate the oxygen, pure oxygen, from the mixture of the different gases in air. We know the air is the homogeneous mixture of the different gases. The major gases of air are nitrogen 78%, oxygen is 28%, and how can we separate the different gases from air? We know the major three gases: 78% nitrogen, 21% oxygen, and 0.9% is argon gas. How can we separate? We know the boiling point of the gases
that means oxygen has the 183, the boiling point of oxygen minus 183, the boiling point of oxygen gas, and the nitrogen has the boiling point minus 196, and argon gas has the 186 minus 186, because the three gases are found in the gaseous state, so their boiling points are in negative. तो माइनस में इनके क्या होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, तो माइनस में ये क्या हो जाते हैं, बॉयल होते हैं, बट व्हेन दे फ्रीज ऑन दे कंडेंस में से होता है वापस वेपर से लिक्विड स्टेट में आना, तो वो पॉइंट पे इनके इतने ही होते हैं, इतने डिग्री सेल्सियस पे ये कूल डाउन होते हैं. सो द नाइट्रोजन कूल्स डाउन एट माइनस 183, oxygen cools down minus 183, nitrogen minus 196, and argon at minus 186. ऑक्सीजन एज द सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है ऑक्सीजन का इसमें minus 183. तो सबसे पहले कूल डाउन कौन होगा, नाइट्रोजन, आफ्टर दैट आर्गन, एंड लास्ट ऑक्सीजन. वी गेट लास्ट ऑक्सीजन एट द सेपरेशन. टेक the air in that type of container and the out in the high pressure and low temperature, decreasing the temperature and increasing the pressure. प्रेशर इसमें बढ़ाते जाते हैं और टेम्परेचर उसका गर्म ज़्यादा करते जाते हैं. सो टेम्परेचर कम करते जाते हैं, प्रेशर बढ़ाते जाते हैं. टेम्परेचर कम होता है तो क्या हो जाते हैं, एयर कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट. एयर लिक्विड स्टेट में आती है, हॉट एयर यहाँ पे आती है, जैसे ही यहाँ पे आएगी, here the condenser, freezing cold water flow in that type of the instrument. इस तरह से इसमें नीचे से क्या होता है, कौन फ्लो होता है, ठंडे पानी का फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इसके अंदर से फ्लो होता है. एंड एयर कम्स फ्रॉम द अपर साइड, एयर्स हॉट एयर कम फ्रॉम द अपर साइड एंड द कोल्ड वाटर कम्स फ्रॉम द लोअर साइड. And the cold water decrease the temperature of the air, and that air convert into the liquid state, and that air goes in that side, and cold compressed air go to that side, and here the separator type of the instrument. यहाँ पे separator type लगा होता है, वहाँ से इसका separation होता है. अब हमें पता है कि सबसे कम जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का आता है. कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ से इसको रिमूव कर लिया जाता है. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीके ऑल्सो. सॉलिड कार्बन, नेम ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस. ड्राई आइस यहाँ से अलग हो जाती है, बाकी बची सारी गैसें आगे इसमें पास हो जाती हैं, यहाँ से पास हो जाती हैं, यहाँ सेपरेटर होता है. यहाँ से फिर दोबारा से यहाँ पे अप साइड में और नाइट्रोजन एंड लोअर साइड में आर्गन यहाँ पे रिमूव हो जाती है. बाकी लास्ट में जो गैस बचती है वो कौन सी बचती है, अपनी प्योर ऑक्सीजन. प्योर ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में इसमें कलेक्ट कर ली जाती है. ऑन दिस मेथड वी कैन सेपरेट प्योर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. Next technique is how can we separate pure copper sulfate from an impure sample. We use the method crystallization to separate the pure copper sulfate from the impure copper sulfate. We take the impure copper sulfate in a china dish and add some water and make a solution so that it dissolve in the water, and filter the water to remove the impurities, and after that we evaporate the water from heating. After the heating and get the liquid and remains the liquid for 1 day. हम क्या करते हैं, हिंदी में समझा देता हूँ आपको. एक चाइना डिश में कॉपर सल्फेट को पानी में घोल लेते हैं, उसको लेते हैं फिल्टर पेपर से साफ़ कर देते हैं ताकि उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज हों वो साफ़ हो जाए.
फिर उसको क्या करते हैं हम दोबारा से गर्म करते हैं। गर्म करने से जो वाटर होता है इवेपोरेट हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज द रिमूव थ्रू द इवेपोरेशन एंड आफ्टर द इवेपोरेशन वो क्या हो जाता है कि वो अपना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वो लिक्विड जो हो जाता है सॉलिड टाइप हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं हम 1 दिन के लिए। 1 दिन के बाद में उसको ढक के छोड़ देते हैं। अब बाकी जो बचा होता है वाटर वो भी इवेपोरेट हो जाता है। फाइनली वी गेट द क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट। दिस मेथड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। To making the crystals from the any type of the solid like the copper sulfate, alum, salt, sugar, these type of the solids have the crystal, and the water which is found in the crystals of these crystals, that is called crystalline water, and this technique is known as the crystallization. ये इनके क्रिस्टल कहते हैं। अलग अलग शेप आती है, छोटी छोटी स्पेशल टाइप की। चीनी की देखिए आपने, नमक की देखिए आपने, एलम की देखिए, एलम मतलब आपकी फिटकरी की देखिए। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन? मेजर देर आर 2 मेजर एप्लीकेशंस। 2 हमारे जो मेन होते हैं। समुद्र से जो नमक बनाया जाता है वो इसी मेथड से बनाया जाता है। वी गेट द प्योर सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। क्या किया जाता है, वहाँ का पानी क्या किया जाता है, बाहर क्यारियों में भर दिया जाता है एंड दैट वाटर इवापोरेट थ्रू द सनलाइट और सन हीट। सनलाइट हीट से वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है और जो रिमेनिंग हो जाता है वो अपना का क्या बन जाता है, नमक मिल जाता है। बट दैट सॉल्ट इज नॉट प्योर सॉल्ट एंड आफ्टर getting that of the salt in the factories that dissolve some water and remove the impurities by the evaporation again, and then we get the pure salt. उससे हमें अपना शुद्ध नमक मिल जाता है। एंड सेकेंड इज द सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द एलम फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल। जो एलम होता है, फिटकरी होता है, वो भी इसी मेथड से, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से बनाया जाता है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ this chapter, not this chapter but today's class, is to purification of the drinking water, because the drinking water has some different type of the impurities, and we get the drinking water from the purification by distillation or by the RO system, and different type of techniques nowadays are applicable, nowadays are found. But in this chapter we will study how can we get the drinking water from the sources of from the water sources. So, this figure shows how drinking water purified from the different stages. First, from the water comes into a tank from the reservoir, and the tank allows the solids to settle down. Means the solids that are settled at the bottom of that type of tank, and the upper the flow water and goes into the next tank. Here the next tank, the sediment of the suspended impurities. Suspended, the term suspended means the suspension. Suspension is the impurities which have the particles less than the बिगर पार्टिकल्स ऑफ द सैंड। इस तरह के जो पार्टिकल होते हैं उनसे थोड़े छोटे पर जो पार्टिकल होते हैं दिखाई नहीं देते हैं, जो कि अपने घुले हुए रहते हैं। दैट इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन एट द सेकेंड टैंक। आफ्टर दैट दिस वाटर गोज इन टू द थर्ड टाइप ऑफ द टैंक। इन दिस टैंक देर आर द 3 layers of the purification of water, and the first one is the fine sand, upper layer fine sand, and in between the gravel and the lower is the क्या होता है, coarse gravels. The different size gravels are found. The bigger size gravels are found at the bottom, and the smaller size gravels are found at the middle, and the upper side are the fine sand. The water come from that and filters, and all the smaller impurities find in that type of the tank, and the pure water comes in the next tank. फिर नए वाले टैंक में जब जाता है तो पानी पूरा फिल्टर होकर जाता है, 3 लेयर से जाता है, पूरा छन करके पानी वहाँ से चला जाता है। एंड आफ्टर नेक्स्ट टैंक इज वाटर स्टोर्ड एंड द क्लोरिनेशन
उसके अंदर क्लोरीन जो होता है उसमें मिक्स किया जाता है। आफ्टर क्लोरिनेशन इट इज़ यूजेबल वाटर और फॉर यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज एंड इज सप्लाई टू द होम्स। सो आज की हमारी ये क्लास कैसी रही इसके लिए आप मेरे को इस कमेंट में दे सकते हैं और इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं। तो आज आपका ये जो अपना जो टॉपिक था सेपरेशन का वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में लास्ट क्लास अपनी बाकी रहेगी। इस क्लास में आपको कैसा लगा उसका कमेंट दें और इस चैनल को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है साइंस फॉर स्कूल्स बाय राकेश सर। तो आपके नए नए वीडियो हर चैप्टर का इसमें आता रहेगा, क्लास 8 के, 9th के और 10th के। तो अपने सभी भाइयों और बहनों को बनाए रखें और इसका लाभ उठाएं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये पूरी सुविधा आपको मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।